Crypto products are unregulated and could be highly volatile. Please be aware of the risks before investing. राज, बाबूजी के आशीर्वाद से हमने अपनी नई शुरुआत तो कर ली, पर अपना फ्यूचर प्लान कैसे करें? बड़े-बड़े शहरों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं। Looking for perfect start? Get a Bitcoin today. Download the Unocoin app. जब मैं तेरी उम्र का था ना, तो एक सक्सेसफुल करियर, लॉन्ग टर्म प्लानिंग सब रेडी करके रख चुका था। और एक इन महाराज को देखो, पूरा दिन फोन में लगा रहेगा। दैट प्लानिंग तो मैंने भी कर रखी है, Unocoin के साथ। नए जमाने के साथ नई चीजें आजमाएं। Looking for Bitcoin? Download the Unocoin app. Guys, we really need to work hard. This wasn't a good quarter. Tell me, are you happy with this? Unocoin. Want to earn Bitcoin? Just grab your phone and shake it. Download the Unocoin app. Bitcoin, 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 Bitcoin. Get a systematic buying plan from the Unocoin app to get your Bitcoin today. Download the Unocoin app. नमस्ते Unocoiners, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका and another one of Unocoin's EMA session and a very long awaited one at that. तो आशीष एंड सात्विक का ये जो 7 का EMA था, हम इसको काफी समय से आप सबके लिए प्लान कर रहे हैं, बट हमारी जो प्लानिंग्स थी वैसे साथ नहीं बैठ पा रही थी and thankfully we are here all together and today we are going to have this long awaited EMA. So first of all, let me introduce our today's guest. Sathvik Vishwanath, the CEO of Unocoin, who you know very well, and again Ashish Sharma, a very famous crypto influencer, the founder of Cryptoverse, जिनको भी आप सब बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, and I'm sure कि आप सब आज के इस EMA के लिए बहुत ज़्यादा excited हैं. Hi Ashish, hi Sathvik, how are you guys doing today? Hi Sambhavi, hi Sathvik. Yeah, Ashish, nice to nice to meet you. Yeah, same here. Actually, I was कि मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि आपके साथ बात कर सकूं and finally we are here. No problem, sure. बिल्कुल and interesting part here is that it happens very rarely when we get to meet
two such massive influential personalities of the industry together on the same platform all together and getting to discuss important stuff with them. So obviously community आपको सारी चीजें तो पता ही है, आपके जो भी सवाल हैं comment section खुला हुआ है, आप अपने comments drop कर सकते हैं. Satvik is more comfortable with English here, but it's okay. आप अपने questions को किसी भी language में drop कर सकते हैं, and will help you understand this. मैं आपके लिए हिंदी में translate कर दूंगी. Okay. So guys, with the first question itself, you know, जब भी we come across massive people and you know the people who have been in the industry for so long, the first question that comes to my mind is what attracted you towards Bitcoin or cryptocurrency as a whole. So let's start with you, Ashish, on this one. या श्योर श्योर एक्चुअली मैं पहले भी बता चुका हूँ. मैं जब क्रिप्टो से जुड़ा था तो मैं भी एक तरह से एक एमएलएम के थ्रू जुड़ा था, और 2016 में मैंने ज्वाइन किया था. तो उस टाइम पर मुझे इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर जैसे जैसे मैंने आगे एक्सप्लोर किया तो फिर मुझे समझ में आया कि एक्चुअली बिटकॉइन किस तरह से वर्क करता है. और जब मुझे समझ में आया बिटकॉइन किस तरह से वर्क करता है और एक नई इंडस्ट्री है और आगे कुछ रेवोल्यूशन इसके अंदर आ सकता है, तो वही मेरे लिए एक यूरेका मोमेंट था. तो तब मैंने ज्वाइन किया बेसिकली. तो मैंने डिसाइड किया कि यस आई हैव टू ज्वाइन और आई शुड ज्वाइन. और फिर उसके बाद मैंने 2017 एंड में अपना चैनल क्रिएट किया लोगों को बताने के लिए कि बेसिकली क्रिप्टो क्या है. बिल्कुल, and I think it's beautiful the work that you are doing, Ashish. आज के टाइम में awareness around this new technology is what we need the most. Now coming to you, Sathvik, with the same question, because you know we have had so many AVs together and never really got a chance to understand your starting point for Bitcoin and crypto. Yeah, so before Unocoin, I had another business which needed me to bring money from US to India, and the only option available to me was PayPal. So where I used to lose about 7% of the money, half of it due to the transaction fees and remaining half due to conversion fees. So when I started looking at the better alternatives of how to make this kind of transactions to work, I happened to stumble upon Bitcoin. But later I saw business opportunities, and it is just that nothing existed in India yet when it comes to Bitcoin, when like any kind of serious business. So that made me look at it as an opportunity and start to Bitcoin. So this is all happening in 2012-13, I think. So, Yeah, absolutely. So what was your initial feeling, Sathvik, when you were starting Unocoin? no, it was very simple. At that time, we were running Meetup, right? So through meetup.com, where our people who want to talk about Bitcoin or learn about Bitcoin could come. Altcoins was not there yet, or maybe it was there but not popular. Only Litecoin and maybe a couple of them. But that meetup became so popular that people started bringing some money in their pocket or duffel bags, hoping that someone else who will come there will have some Bitcoin to share. So they'll be able to do some transactions. So some transactions happened in that way as well. So few of us felt that this is not the way the transaction is supposed to happen. In fact, in the world, like in US, you have Coinbase, and then Europe was getting served by Bitstamp. At that time, Japan still had Mt. Gox. So we thought maybe in India it's an opportunity, and we want to provide a easy, straightforward, and secure way for people to buy and sell Bitcoin, and that made us, start on the point. Yeah. Absolutely. And आशीष, जैसा कि मुझे याद आ रहा है जब हमने पिछली बार साथ में बात करी थी तो मुझे याद है कि आपने बताया था कि आपने भी अपने जो पहले सेट ऑफ बिटकॉइंस थे वो उनो कॉइन से ही लिए थे. करेक्ट. तो आपका क्या एक्सपीरियंस था, you know, coming onto the platform that is India based and of course bringing bitcoins to billions in India. So what did you feel about that at that point? सो उस टाइम पे इट वाज लाइक कि कोई प्लेटफॉर्म तो मुझे पता नहीं था. मैंने जस्ट गूगल किया, मुझे यूनो कॉइन के बारे में पता चला. यूनो कॉइन पे मैं आया नॉर्मल. मुझे बाकी जैसे इंटरनेट का अच्छा नॉलेज था तो बहुत इजी था मेरे लिए. जिसके पास अच्छा नॉलेज है इंटरनेट का और जिसको पता है साइन अप कैसे करने हैं, कैसे अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, वो नॉलेज है. और प्लस उसको पता, किसी को पता है कि कैसे बैंक ट्रांसफर और वो सब चीज़ें करने, तो उसके लिए बहुत ईजी था. मतलब मेरे लिए तो बहुत ईजी था. अगर कोई एक न्यू कमर होता तो शायद उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता, लेकिन मेरे लिए बहुत ईजी था. और मैंने अपने बैंक अकाउंट के थ्रू ही जो है उस टाइम पर बाइंग करी थी. ओके. सो जो अब मुझे पूछना है हमारी कम्युनिटी के लिए एंड ऑफ कोर्स यू नो फॉर मी एज वेल,
कि what was the first lesson that you guys learned in your crypto journey? Satvik, starting with you. Um, it's tricky because it's hard to distinguish. Um, I think one thing we should learn about crypto journey is just don't get carried away, right? So stand on the ground, don't lose your intelligence. Think about what you're doing because everyone is bringing in hard-earned money. So think twice before doing any investments. And one should question themselves: what are they trying to achieve by doing a specific investment, right? So that usually makes them realize and sometimes even change the strategy and correct themselves. I think so. If they don't know what they're doing, they should not be in crypto. Too tough. Absolutely. And Ashish, what about you? या मुझसे जब भी इस तरह का क्वेश्चन कोई पूछते तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि जो जैसे कि अभी सात्विक ने भी बोला कि डू योर ड्यू डिलिजेंस और उसके अलावा कि बस लगे रहो और बाय द डिप होना चाहिए ना कि बाय द टॉप होना चाहिए हाँ, so ये भी today one other interesting thing about our EMA is with Ashish we are going to get a lot of trader perspective insight, and with Satvik we are going to get a lot of investor perspective insight. करेक्ट So I think this particular EMA today is diverse in its own ways. So guys, go ahead. आपके जो भी सवाल हैं आप comment section में डाल सकते हैं. हमारे एक LinkedIn user ने एक question पूछा है यहाँ पर. He's saying, I find the biggest challenge is how to create trust among investors, beginner investors. We should keep conducting sessions on how to use wallets and specifically use self custody wallets and why to stay invested for long term and how not to get carried away with fly by the night coins. Yes, absolutely. And I think, Ashish, I would like your opinion on this first because from a trader's perspective, I know the new coins that are coming in the market are really, really exciting. So, आप क्या कहेंगे इस बारे में? या तो जैसे नए ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमेशा जब भी आप एक नए कॉइन को आप ट्रेड करने के लिए अगर आप जा रहे हो तो मैं आपको कहूँगा कि आप एक अच्छी जो ट्रस्टेड एक्सचेंज है उसके ऊपर जो कॉइन्स लिस्टेड है उन्हीं में ही ट्रेड करो क्योंकि आपको जो एक सेफेस्ट कॉइन जो रहेगा जो आपके लिए सेफेस्ट रहेगा वो एक्सचेंज वाला ही कॉइन रहेगा अगर आप जाते हैं डेक्स के ऊपर बाय करने के लिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है मार्केट के अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप फंस जाएंगे कहीं ना कहीं फंसने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी तो उस केस के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही करना चाहिए कि अच्छी एक्सचेंज जिसके ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो वहाँ के ही बेस्ट प्रोजेक्ट्स या फिर आप इजीली जो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर टॉप 50 टॉप 100 वाले जो कॉइन्स हैं उन्हीं के अंदर आप ट्रेड करो सेफेस्ट वो रहते हैं अगर आप अपने जो मनी है उनको बचाना चाहते हैं तो दैट्स माय सजेशंस And Satvik, what are your suggestions on this? Yeah, I agree with Ashish. It will just come down to how you ensure that you preserve your money, understand the seriousness of it. There are a lot of tools like stop loss and such. People can always utilize it. So when it comes to self-custodying, yeah, that's obviously the best way. But in an attempt to self-custody, don't lose the money, right? So it would be shame. करेक्ट So if someone is saying, I am more bothered about self total holdings that they have is like 10,000 rupees worth of Bitcoin. That is not what they should be doing, right? So there is some transaction fees to move in and out of self custody as well. And if they are trying to do something like hardware wallets and such, it will also cost money. So one should do with smaller quantities, become really comfortable. Um, a lot of people want to keep it in such a secret that they'll forget it someday eventually, okay, because they don't tell anyone, they don't write it anywhere else. So the more chances that they lose it than actually they take advantage of it. So whenever they do self custody, it's a good idea to properly write, maybe if you have any kind of passphrases or passcodes or whatever you apply, and just keep it in one or two different places, so that like you will be able to access it just in case if you forget. The things that you really want to remember very hard is the ones you also forget. So it's like tricky in culture.
And also, we should understand that if we are doing self-custodying, a lot of Bitcoin or a lot of cryptocurrencies, it's good to tell it to one or two of your family members as well. In Unocoin, we have a feature called nominee feature. So just in case if the person who have account cannot access it anymore because it don't exist, then we will have his relatives or whoever is of next kin who can gain access to it. So Correct. plan on that. It is so digital in nature that if you forget or if you forget to pass it on to whomever you to give, it just don't even exist. So one should place some. I mean, should pay some importance for that. So then I think when it comes to the exchanges like Unocoin, it's generally safe to keep the cryptos to some extent there. I definitely would not recommend someone holding many crores worth of crypto just without thinking about self custodying. But the exchanges also apply a lot of security protocols in place to help secure the crypto for users. So it will come to the user to choose what method, whom to trust, and what is the expense is willing to incur to secure his crypto. Absolutely, absolutely. So, Can I ask question? Can I ask absolutely, question? Ashish. या श्योर ओके थैंक्स थैंक्स तो सात्विक मैं हिंदी में ही पूछना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप हिंदी में ही आंसर करेंगे तो थोड़ा अच्छा सा लगेगा तो थोड़ा कम्युनिटी पूरा हिंदी कम्युनिटी है तो मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अभी सिनेरियो चल रहा है मार्केट अभी समझ में नहीं आ रहा है बुल स्टार्ट हो गया है या अभी भी हम लोग बेयर में है हमारा क्या टॉप अभी करंट में हो सकता है अगर हम लोग वापस बेयर में जा रहे हैं तो उस पे आपका थोड़ा सा एक है ना रोशनी प्रकाश डालिए थोड़ा सा उसके ऊपर देखो मुझे वो बेयर मार्केट है वो बुल मार्केट है उतना फर्क नहीं पड़ता या ठीक है और मैं ऑलरेडी शायद तीसरा बेयर मार्केट बुल मार्केट में ही देख रहा हूँ वो इम्पोर्टेंस क्या होता है क्रिप्टो का वो इम्पोर्टेंस कम नहीं हो रहा है मतलब उसका वैल्यू क्या है उसका रीजन फॉर एग्जिस्टेंस क्या है वो वो सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है लेकिन अलग तरफ से हम स्पेकुलेशन करता है उसमें प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकता है बट आप ग्राफ देख लिया तो वो 10 साल का ग्राफ देख लिया तो वो वो बहुत आसान से पता लगता है कि वो वैल्यू ज्यादा ही बढ़ रहा है तो होने के बाद मुझे लगता है अभी बात 36,000 37,000 जैसे चल रहा है बिटकॉइन वो लोएस्ट पॉइंट शायद 16,000 था करेक्ट जैसे देख लिया तो या लुक्स लाइक आइदर स्टेबल मार्केट और बुलिश मार्केट जैसा लगता है लेकिन लास्ट टू बुल रन्स में क्या हो चुका है मतलब वो प्रॉपर बुल रन शुरू होने के लिए पहले वो वैल्यू थोड़ा गिर चुका है होने के बाद ही पूरा बुल रन स्टार्ट हो गया है जैसा अभी वक्त भी आ सकता है मतलब शायद लाइक ब्लैक स्वान इवेंट अभी आना बाकी है एज पर यू 20-25% शायद वो गिर सकता है वो जैसा हो गया तो उसका बाद क्या होता है आइदर पूरा फ्लॉप और पूरा बुल रन जैसा ही नहीं रहता है जी And I think if we are talking about the current market scenario, no, I have a question here from Sarika Solanki. She's asking, is there staking of Uno? Sarika, if you could clarify, like, do you mean do we have a Uno coin, or is there something else you're asking about, a feature or something? So while you are, reiterating your question, एक छोटी सी टिप्पणी आप दोनों से ले लेते हैं ऑन द करंट मार्केट सिनेरियो वी रिसेंटली सॉ नॉट रिसेंटली जस्ट यस्टरडे सीसी स्टेपिंग डाउन फ्रॉम हिज पोजीशन एज द सीईओ ऑफ बाइनेंस नाउ अगर ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव से देखें तो लोग इस अपॉर्चुनिटी का वेट भी कर रहे थे बट मार्केट उतना रिएक्ट नहीं किया सो ओवरऑल आप लोगों के ओपिनियन में व्हाट वाज द आउटकम एंड व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन नाउ लुकिंग एट द मार्केट लुकिंग अहेड ऑफ द मार्केट So, Ashish, you first. एक्चुअली सेम क्वेश्चन मेरे माइंड में था कि मैं सात्विक से सेम क्वेश्चन पूछूंगा कि जो सीजी के साथ में जो ये हुआ है जो यूएस वाला प्रॉब्लम चल रहा है
और जिस तरह से जो भी चीज़ चल रही है, आगे जो भी होगा, उसके ऊपर आपका क्या विचार है? और दूसरी चीज़ कि इंडिया के अंदर भी ऐसा कुछ हो सकता है क्या? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ऐसा कुछ देखा नहीं है इंडिया के अंदर, कि क्या इंडिया के अंदर भी इंडियन गवर्नमेंट इस तरह से किसी एक्सचेंज को या किसी को इस तरह से करके कर सकते हैं? मतलब ओवर टू यू। Okay, regarding staking of Uno, I think the customer is asking if there is staking provisions Yeah. where someone can bring cryptocurrency like Bitcoin, USDT, and such, and be able to earn on top of it. Yeah. So we have this earn interest feature where our customers will be able to deposit their USDT. We only provide it for USDT for today. We are now working on providing it for ETH as well in the very short term. So yeah, our customers will be able to fix a deposit of USDT, and they will earn some money up to like 8% or so per year. So that is the interest that they earn on top of their fixed deposits, which is like earning using the money that is just keeping idle. Correct. Okay, so so regarding the present situation, see, when it comes to Binance, see, one thing I'm actually worried about is in this so-called decentralization world, we don't want even semi-centralizations to happen. Okay, so the more and more it continues to be decentralized, it's better for us. But we obviously have extremely intelligent and talented people. Even though they try to do something small, it will actually end up so big that it will look like, okay, this person holds a lot of control, right? So, for example, Bitcoin, we actually say it is quite well decentralized. But when you say Ethereum, okay, yeah, there is one person called Vitalik, we start like that. So, the possibility that goes. When you say, okay, Right. fine, well, let's talk about Matic. So then we talk about, okay, there is another person called Sandeep. So there is some aspect of it. If it ever becomes centralized, it always poses a risk for that part of ecosystem. Even I am very surprised that the market did not react significantly because CB is settling down. In fact, whatever it reacted, it's actually back today, right? So, however, it was 2-3 days ago. So that actually shows to some extent that even though he is obviously the main person having the vision to build Binance, it is not like he is the most important person anymore. It is very similar to how at one point of time we have Satoshi Nakamoto, but after he left, it was still fine because it just works because of the way they created the system, right? So the system will drive itself with all the rules and regulations in place. So that is what it looks like to me. Okay. So, however, on the other side, why the issue exactly happened? It is because it's not like worldwide issue that actually happened. It's more about US issue, United States issue within the United States. So where there are rules about the security laws and such, and what can be listed, what cannot be listed, and about what is the KYC levels that you have to take, and whether you are allowing the VPN connections. So there are like so many things. It's very similar to how the banks will work in India. Okay. Correct. So their SEC is the governing body. It's a very clear governing body when it comes to security, it's exchange commission. So when it comes to that, and they have filed a case that whatever has happened is happening in Binance.us, which is US's own regulated entity. It was regulated. It's not regulated, right? So it's properly Correct. regulated entity. Mhm. So then it was a very clear evidence what are the lapses that they did. So if I have to draw a parallel, let's say there is a bank, ABC Bank in India, which is completely regulated by RBI, and if the directors of that particular bank intentionally create provisions to create favors to some people or favors to themselves in whatever way, it is wrong because people are going there because it is a bank. They are not going there thinking that it's another scammy business. So it is about people's money and cheating people's money, right? Correct. So we usually don't see this happening when it comes to SEBI, but SEBI's equivalent is what is SEC in US. Okay, so they had filed the case, and it looked like after all the investigations and lawyers' opinions and such, CC had to plead guilty, saying that yeah, this we have done it intentionally and such. Due to which, yeah, they cannot have their existence in US anymore. So they're moving out of US.
So now the rest of the Binance in the world will continue to work. So with whatever it is, and Binance is, I mean, the CC is stepping down, and we have one more compliance background and efficient person who worked in ADGM in UAE. So taking up the interim CEO role. So I think this will now more steer in the direction of compliance as compared to how for today it looked like, okay, if you want to stay anonymous, go to Binance. If you don't know where to do the trade, just go to Binance P2P. You will avoid some extra fees. So like those kinds of things is like the wrong intentions or wrong intuitions and people had when it comes to Binance. I think all of that will start getting cleared now. So it will probably either if I see Binance still be surviving after 5 years, it will be one of the really good regulated and rules following company if it exists. If it exchange. doesn't, I think so. या ग्रेट ग्रेट एक्सप्लेनेशन, You know, काफी सारी चीजें थी जो कि क्लियर हो गई। या बिल्कुल बिल्कुल। एंड आशीष, अब आप मेरे को ये इसी पूरी चीज पे एक टिप्पणी दीजिए ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव से। ये तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव से सात्विक ने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर हमें दे दी कि क्या सीन है, क्या हो रहा है एंड क्यों हो रहा है। अब आप करेक्ट ट्रेडर्स करेक्ट। पर्सपेक्टिव से कुछ बताइए इस बारे या जिस सात्विक ने कहा बिल्कुल कि हम लोग भी शॉक थे कि मार्केट उतना ज्यादा डंप नहीं हुआ, इवन बीएनबी कॉइन भी उतना ज्यादा डंप नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि काफी ज्यादा बीटीसी में भी 33 और 32 टेस्ट करे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सडनली हम लोगों ने रिकवरी देखी, बीएनबी कॉइन के अंदर भी हम लोगों ने रिकवरी देखी। तो ये काफी ज्यादा कह सकते हैं कि मार्केट मेच्योर हो गया है या क्या, पहली बार मैंने ऐसे देखा है। अदरवाइज हम लोगों ने कभी भी इसी तरह का न्यूज, कोई भी एक बड़ा न्यूज आता है तो हमेशा एक डंप देखते हैं, सडनली हम लोग 20-30% डबल डिजिट में हम लोग गिरते हुए देखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। और पता नहीं, हो सकता है कि जैसे काफी रूमर है कि जो ईटीएफ्स आ रहे हैं शायद उसकी वजह से भी कुछ हो। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या सीजी जो स्टेप डाउन हुआ है, क्या उसका कुछ लेना देना इनसे है? क्या ब्लैक रॉक के जो ईटीएफ आ रहे हैं उनसे कुछ लेना देना है कि आपस में लिंकअप है कि नहीं है? तो इस तरह की भी चीजें चल रही है। शायद इस ईटीएफ वाला जो हाइप है मे बी उसने बचा लिया मार्केट को। मेरा तो ये पर्सपेक्टिव है। बट हाँ, करेक्शन होना चाहिए था, बट अभी करेक्शन नहीं हुआ है। इसका मतलब हम लोग दिसंबर एंड में हम लोग करेक्शन जरूर देखने वाले, अगर अभी नहीं हुआ है तो। बिल्कुल बिल्कुल। एंड मुझे तो कई बार मैं जब आई वाज रीडिंग दिस न्यूज़ इन द मॉर्निंग, जस्ट दिस मॉर्निंग, एंड मुझे ये भी लग रहा है बिकॉज़ दे टुक वेरी प्रॉम्प्ट स्टेप्स एट द राइट टाइम। बाइनेंस टीम, दे इमीडिएटली अपॉइंटेड अनदर सीईओ, दे सेटल द होल थिंग। सो मुझे ये भी लग रहा है कि क्योंकि उन्होंने इतने प्रॉम्प्ट स्टेप्स, लोगों को कहीं ना कहीं जो विश्वास था वो रिस्टोर हो गया कि नहीं, दे विल नॉट प्ले विद आवर इमोशंस एंड दे आर गोइंग टू स्टे इंटैक्ट, नॉट लाइक एफटीएक्स दैट जस्ट वेंट स्ट्रेट फॉर अ कोलैप्स आफ्टर ऑल ऑफ दैट हैपेंड। जी तो आपको लगता है वो भी एक रीजन हो सकता है? या बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि यहाँ पर काफी सारी थ्योरीज है जो बात हो रही थी। क्या कहते हैं, ग्रुप के अंदर भी हम लोग बात कर रहे थे, काफी सारी इसी तरह की चीजें बात कर रहे थे। ईटीएफ एक पर्सपेक्टिव, एक जैसे आपने बात किया एक वो भी पर्सपेक्टिव है। तो बहुत सारे ऐसे पर्सपेक्टिव है जो मिल करके कह सकते हैं कि मतलब यहाँ पर एक ये भी चीज है कि सीजी एज अ पर्सन, एक पर्सन है सिर्फ। यहाँ पर कोई किसी के फंड को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है या एफटीएक्स जैसा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है कि एक्सचेंज गिर रही है तो उसकी वजह से भी मार्केट बची रही। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने बचा लिया बेसिकली मार्केट को, और अच्छी बात है अगर नहीं गिर रही अभी मार्केट। बिल्कुल बिल्कुल। इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से तो मैं कहूंगी ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जी। लुकिंग अहेड एट अ बुल रन, दैट वुडंट हैव बीन अ वेरी गुड थिंग टू सी। आल्सो तो सात्विक, क्या आपको लगता है कि मार्केट और क्रिप्टो पहले से ज्यादा मेच्योर हो चुका है या मेच्योर हो रहा है? आपको कैसा फील होता है एज ए इन्वेस्टर जब आप मार्केट में देखते हैं, नए इन्वेस्टर आते हुए देखते हैं या नए प्रोजेक्ट्स को आते हुए देखते हैं, आपको कैसा लगता है? मुझे मेच्योरिटी मतलब वो इम्पैक्ट कैसा लेता है उसके करेक्ट ऊपर मेच्योरिटी डिपेंड होता है, सिर्फ नॉट करेक्ट। हु इज इन्वेस्टिंग। ओके, इफ यू सी 2013 14 15 16 में बहुत सारा न्यूज़ आ रहा था। हर महीने न्यूज़, मतलब वो चाइना बिटकॉइन बैन कर चाइना चुका है। ब्लॉक, हाँ चाइना ने बैन हाँ, कर दिया। और रशिया ब्लैंक कर दिया। सो जैसे सो उसी वक्त बहुत इम्पैक्ट ले रहा था क्रिप्टो इंडस्ट्री। जी। लेकिन बार बार यही खबरें सुनने के बाद वो लोग इग्नोर करने के लिए शुरू किया।
जी उसके बाद शायद वो इलान मस्क ट्वीट किया, वो बिटकॉइन का प्रमोट किया वगैरह सब, उसी वक्त बहुत बड़ा पॉजिटिव एंगल दिख रहा था। वो उसके होने के बाद डॉज कॉइन भी के लिए भी जैसा। लेकिन अभी वक्त मैं सोचता हूँ एक और बार इलान मस्क एक और जैसा स्टंट करेगा तो क्या होगा। मुझे जी लगता है उतना इम्पैक्ट नहीं होगा, है ना, हम्म इम्पैक्ट होगा। सो नेक्स्ट थोड़ा इम्पैक्ट करने के लिए और और कोई पावरफुल बंदा आना पड़ेगा और उसके ऊपर कमेंट्स देना पड़ेगा जैसा। जी मतलब मुझे लगता है वो डेफिनेटली मैच्योर हो रहा है। बड़ा बड़ा कमरे से कम कम इम्पैक्ट हो रहा है, मतलब मेच्योरिटी ज्यादा है। राइट सो वो बढ़ता ही जा रहा है शायद, विच इज लाइक गुड गुड फॉर अस। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी एक और मेरा सवाल है थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक लैंडस्केप के पर्सपेक्टिव पे। यू नो वी सॉ दिस न्यूज आई थिंक कपल डेज बैक दैट Javier Milei has become the new Argentinian president and he has had a very pro Bitcoin stance. इसके पहले people have been protesting in Argentina about inflation and trying to gather support for Bitcoin. So now हमने देखा कि कुछ साल पहले like I think that was 2020 when El Salvador adopted Bitcoin as their legal tender and now Javier Milei is having a pro Bitcoin stance. So क्योंकि हम हमेशा अडॉप्शन की बात करते हैं, हम रेजिस्टेंस देखते हैं कई सारी कंट्रीज से, कई सारी गवर्नमेंट से हम लोग काफी सारा सपोर्ट देखते हैं। आपको क्या लग रहा है आने वाली बुल रन को ये कैसे फ्यूल कर सकता है या फिर क्या इम्पैक्ट डाल सकता है ओवरऑल? आशीष। मुझे लगता है अगेन इट विल कम टू मार्केट मेच्योरिटी। इफ मार्केट इज मेच्योर इनफ, this is not going to be a huge impact, right? It may have some impact, but if you say okay, US made Bitcoin a legal tender, yeah, that is impactful. That's इम्पैक्टफुल But major. you say smaller countries, not so significant ones for whatever reasons, um, looking at pro Bitcoin or making it a legal tender, it will have some impact, but it's not very significant. But however, we need to have these kinds of small impacts for this to continue going ahead, and eventually it should mean something. Absolutely, absolutely. What do you think जी about that, Ashish? या तो जैसे मैंने कुछ एक जैसे ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे हैं, वहाँ पे ना काफ़ी बातें होती रहती है इसी तरह से कि क्या फंड्स किधर से मूव हो रहे हैं, क्या हो रहा है। तो अभी जैसे पीछे सुनने में आ रहा था कि जो साउथ अमेरिका है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिप्टो के अंदर इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं, काफ़ी फंडिंग वहाँ से जो है प्रोजेक्ट्स के अंदर और उनके अंदर आते हुए नज़र आ रही है। और ऐसे ही अफ्रीका से भी कुछ कंट्रीज से काफ़ी मतलब हो सकता है ये रूमर्स ही है, वैसे तो रूमर्स क्योंकि सुनने के लिए मिलते रहते हैं कि वहाँ से काफ़ी फंड्स जो है इनफ्लो हो रहे हैं क्रिप्टो के अंदर। और पीछे एक डेटा भी आया था कॉइन ग्लास का, आई गेस उन्होंने भी ये शेयर किया था कि क्रिप्टो के अंदर पिछले 6 महीने से काफ़ी फंडिंग जो है आ रही है। तो यस, ये एक इम्पैक्टफुल हो सकता है एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, एक पुश करने के लिए क्रिप्टो को। और यस, जैसे जैसे ईटीएफ भी आएंगे तो नो डाउट हम लोग काफ़ी अच्छी और ज़्यादा अच्छी स्थिति के अंदर होने वाले हैं कमिंग डेज के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। सो हमारे जो व्यूअर्स उनके लिए एक छोटा सा क्विक नोट दोस्तों, जब आप हमारे साथ इंटरैक्ट करते हैं इन सारी यूनिट्स पर तब बात करना ना और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर हियर टू सॉल्व योर क्वेश्चंस एंड योर डाउट्स एंड योर क्वेरीज। सो गाइस अपने क्वेश्चंस को, अपने इंटरैक्शन को, मतलब अगर आपके कोई स्टेटमेंट्स, कोई ओपिनियंस है वो भी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए सो दैट वी कैन डिस्कस ऑन दैट एज वेल एंड मेक द सेशन मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग। So now like we have been talking about AMA, sorry, ETF in this AMA for the past few questions. अब मुझे ये भी एक चीज आप दोनों का ओपिनियन इस पर जानना है. What is your opinion on ETF का approval in terms of getting it approved? Do you think that it will do you think it will get approved or what will it be like? It's a little tricky. I think two things need to happen. So one is properly regulated entities should follow all the rules and regulations that exist. And on the other side, the ones which are not properly regulated should really badly screw up the things, right? When those two things happen at a particular point of time, then people will understand that, okay, if it is not regulated, it is danger and harmful for people and people's money.
and if it is regulated, it is good for people. And now comes, okay, if it is good for people, then what is good for entities, what is good for VCs, or what is good for bigger investors with deeper pockets and such. So to protect them at that point of time, I think ETF would make more sense. But ETF will come. It's definitely not if the question. It's not an if or else question. It is just the matter of when, right? So, and I'm actually surprised that we are only depending so much on ETF in US. There could be many other countries which can have something very similar, and the countries can take advantage of it by opening up to the global markets. We have not seen that happening significantly as well. But yeah, when ETF launches in US, I strongly believe that to be a very good signal for the industry. करेक्ट Absolutely, absolutely. And Ashish, what do you think about that? या मतलब जैसे मैं चार्ट देखता हूँ तो चार्ट को देख करके तो यही समझ में आता है कि अगर हम लोग गोल्ड के साथ में कंपेयर करें तो शॉर्ट टर्म में यस वहाँ पर भी काफ़ी वॉलेटाइल रहा था ईटीएफ के टाइम पर, और फिर उसके बाद में एक ग्रोथ जो है वो स्लो हो गई थी गोल्ड की। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे देखने के लिए मिल सकता है एज पर पास्ट रिकॉर्ड्स। और अगर देखा जाए कि जैसे सात्विक ने कहा कि रेगुलेशंस इम्पॉर्टेंट है, यस बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये सब स्कैम और ये सब थोड़ा सा कम हो जाएंगे उसकी वजह से, और चीज़ें थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगी लोगों को, इन्वेस्टर्स को। और जब हम लोग बात करते हैं क्रिप्टो बुल की जो इतना ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, तो शायद वो वॉलेटिलिटी के ऊपर थोड़ी सी लगाम लग जाएगी। हम लोग पहले 2018 से ही ये बातें कर रहे हैं कि जब हम लोग रेगुलेशंस आते रहे देखेंगे 2020 2022, तब हम लोग ये बातें करते थे कि उस टाइम से ही हम लोग 2018 से ही रेगुलेशंस की बातें सुन रहे हैं। तो तब बातें करते थे कि यार जब रेगुलेशंस आ जाएंगे तब इतना वॉलेटिलिटी नहीं रहेगा जितना अभी चल रहा है। तो आई गेस ये उसी चीज़ की शुरुआत है, और अभी तो लोग एंजॉय कर रहे हैं कि मार्केट अच्छी हो जाएगी, बुल रन आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब हम लोग यहाँ से 10 साल और 20 साल का पर्सपेक्टिव लेते हैं तो बीटीसी उतना वॉलेटाइल, जो हम लोग 1 मिलियन वाला जो टारगेट लेके बैठे हुए बीटीसी का, वो पता नहीं कब जा करके फिर पूरा होगा। Bilkul, bilkul. And I think the essence of Bitcoin and cryptocurrencies is that they have given us a very good amount of returns, but the volatility is still there. And in the coming years, it will get comparatively more stable. But again, that mark for us to reach that mark is still some time away. जी And so I think in a lot of our AMEs, Satvik, we keep discussing the fact that about the volatility side of the things with you, with Sunny, with our external speakers as well, कि कब stable होगा हमारा market. And अभी जो आने वाला बुल रन है उसके लिए आपका क्या पर्सपेक्टिव है, क्योंकि इतनी सारी हमने प्रेडिक्शंस देख ली हैं। 1 बिलियन की तो अभी के लिए नहीं है, अभी के लिए तो है $100,000 की। So what do you guys think about that? $100,000, is that a doable benchmark? No, Ashish, go I ahead. definitely think so. It's definitely an achievable benchmark. But again, if you say, yeah, there will be bull run, it'll achieve. Yeah, that is one possibility. But if you want to achieve in the normal sense, like how the rest of the other investment classes achieve over a period of time through appreciation and such, we may be a few years away. But if there is a crazy bull run, maybe that will get shortened to maybe just a year. करेक्ट करेक्ट। हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि यस 120 150 डुएबल है, और इतना तो होना चाहिए एटलीस्ट इस बार बीटीसी का हायर प्राइस, और बाकी फिर उसके बाद जो भी ऑल्ट्स करेंगे वो देखेंगे। Bilkul, bilkul. And because we are discussing this ahead of the bull run, we don't know for sure if we are in the ongoing Yes. phase of a bull run, or if it is coming our way in the next few months or what. So अगर हम कुछ तैयारियों की बात करें तो what would you guys suggest, like how should investors and traders prepare themselves for the upcoming bull run? Topic started with you. See, it's little easy to tell, do your research, okay. But for a person who want to invest a small amount of money, not like this major part of what we do itself is crypto investing, which is true for most of us, right? Like most of investors, doing research is actually tough, right? So where to start, what to trust will be a very challenging task. But still,
if depending upon the money they are putting, they will have to invest the time to understand the risks associated. Even if they don't get the technology, even if they go with how the rest of the world is seeing it, the where okay, what is Bitcoin? Just like an easy way of transferring money from anywhere to anywhere in the world, fast and free. It's as simple as that. It's okay even if you just understand technically that much, right? So when someone is investing in, for example, Infosys equity, how much they know about technical things inside Infosys? It's very rare, right? So to some extent, what they see is the balance sheets and profit loss and maybe prospect within the next few years, and they'll go ahead with the investment. So at least that they will have to see when it comes to these kinds of crypto as well. Don't just get influenced by influencers, right? So the influencers, when he's saying something, will have to put the perspectives of what if it works this way or what if it does not work this way. Why he think about it in a specific way. Else, at the end, lot of influencers would just do it for because someone told them to do it and they're getting paid for it. So, whatever it is, you can always trust to one extent, go back to research and verify to what extent whatever is being claimed is true. Okay, so and a lot of the asset managers in developer countries say that don't invest more than 5% of your total money in crypto. So that really holds good. I would say if you are between 20 to 30, maybe you can go up to 5%. Maybe if you're above 30, 35, 40, etc., maybe reduce it to 3% also. It doesn't matter. So it's like risk taking ability should reduce over a period of time. So you should be very careful unless you have a huge portfolio where this does not affect at all. Absolutely. So I think putting those two things in mind probably should help you to prepare. And if you are looking at investments itself, like when to invest, that's like the toughest question to answer. Um, I feel all the time that it's a good time for investment in crypto. And irrespective of whether its price is up or down, because generally you're looking at the long term where okay, if I'm investing X, when do I get some 20% or 30% or 50% return? So that's usually your question. So either it may happen within few months or 1 or 2 years, as long as you're prepared to wait. Don't keep on waiting that okay, let this go down by 2%. I will invest. That stress no need to be taken. Invest and then anyway, it's quite still volatile in nature. You'll be able to exit at right prices, so keep track of it, etc. So yeah, so other things don't take loan. That's like the most serious stupid thing one could Absolutely. actually do. So don't do it. I think about the trust part as well, Satvik, that you mentioned. The last AMA with we had Ashish, I remember we discussed this part as well. कि ये जो और भी influencers हमारे उनको कैसे trust किया जाना. I think that with Ashish is something that I really admire since I've gotten to know about him. The best part here is all the insights. I'm a part of their cryptoverse group. I keep looking at whatever they're discussing, and I think it's the beauty of putting efforts to make others aware about the technologies that Ashish is making. And I mean, it's really interesting how he is always putting in the right information, putting in things about the right things. And it's very interesting to see because even a lot of times when I am looking at things, I get to learn so many new things. I'm just a silent spectator over there, but it's Yeah. always interesting to watch this. So, Ashish, what do you think about that? या तो जब भी जब भी मैं किसी को सजेशन देना होता है तो सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, अगर किसी ने मन बना ही लिया है कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले तो कि एटलीस्ट मार्केट डिप के अंदर होना चाहिए और ईएमए एटलीस्ट 10-20 के आसपास में होना चाहिए, तब आप इन्वेस्ट करो, डीसीए करो उस लेवल के ऊपर। और एक जो हम लोगों ने सेशन भी रखा था, इफ यू रिमेंबर फर्स्ट सेशन जो था हम लोगों का, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन भी होना चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ें मैं हमेशा उनको सजेस्ट करता हूँ और बेस्ट प्रोजेक्ट्स के अंदर ही इन्वेस्ट करने की हमेशा सलाह देता हूँ और बस मेरा यही पर्सपेक्टिव रहता है और बेस्ट एक्सचेंजेस के थ्रू ही, कि ताकि उनको आगे जब भी उनको टैक्स पे करना है या जब भी उनको आगे अपने कॉइन्स को होल्ड करना है तो अच्छी एक्सचेंज के साथ में रहे, जैसे यूनो एक्सचेंज है, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टर्म से इंडिया के अंदर अवेलेबल है। तो एटलीस्ट ऐसी एक्सचेंज के साथ में ही जुड़े जो कि लॉन्ग टर्म से अवेलेबल है और सब कुछ
इजीली जो है मैनेज हो रहा है। Absolutely, absolutely. And तो I मेरा think एक क्वेश्चन था यहाँ पर सात्विक से। सात्विक, कि अ, जैसे हम लोग देख रहे हैं इंडियन क्रिप्टो के अंदर कि बहुत सारी एक्सचेंजेस आई और चली गई, और कभी कोई फर्स्ट हुआ, कभी कोई सेकंड हो गया। तो इस तरह से आप कैसे देखते हैं आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि बहुत सारी एक्सचेंजेस जो बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो हम लोग कब हम लोग इस लेवरेज और इस तरह के प्रोडक्ट आते हुए देखेंगे के अंदर? तो ऑलरेडी एक 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 प्रोडक्ट हमारा पास है। हमारा कस्टमर बिटकॉइन लेवल प्लेज करने के बाद यूएसडीटी ले सकता है, और वो यूएसडीटी आईएनआर भी खरीद सकता है। आईएनआर कन्वर्ट करके वो बैंक अकाउंट में भी ले सकता है। जी। क्योंकि कभी कभी लगता है ओके, आई हैव 5 बिटकॉइन व्हिच आई बॉट मे बी 10 years ago, 8 years ago, बट करेक्ट। आज मुझे वो बेचने के लिए मन नहीं हो रहा है। मुझे लगता है अभी बेच दिया तो वापस खरीदना बहुत मुश्किल मुश्किल हो एक जाएगा। नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए। जी। ट्रेडर के लिए वो अलग चीज है, राइट? सो हर रोज बेचता है और खरीदता है। तो इसीलिए हम क्या किया है, वो बिटकॉइन प्लेज करके वो रुपीस उसके लिए बैंक अकाउंट ले सकता है। मैरिज वगैरह हो तो कुछ भी इन्वेस्टमेंट लाइफ में हुआ तो वो यूज कर सकता है, और वापस रीपे करने के बाद वो अमाउंट वो बिटकॉइन रिलीज होता है। और जी। इसमें शायद सोचो आपके लिए 10 लाख रुपए चाहिए था, मतलब हम क्या करता है 20 लाख अमाउंट इक्विवेलेंट बीटीसी लॉक करता है, जी। और एक प्रोडक्ट के लिए 10 लाख पूरा अमाउंट मिल जाएगा। जी। आप वापस पे कर सकता है, और थोड़ा इंटरेस्ट भी लगता है उसके ऊपर। So, वो पे करने के बाद आपको बिटकॉइन रिलीज होता है, आप ले सकते हैं। So, जैसा ये लेवरेज ही होगा, लेकिन मुझे हम डरते हैं कि 5x 10x 20x जैसा लेवरेज दे दिया तो बहुत बहुत कस्टमर्स सोचेगा, वो थोड़ा मिसलीड हो जाएगा। क्योंकि हमारा कस्टमर्स नॉट सेम एज बाइनेंस कस्टमर्स, और नॉट राइट। सेम एज our competitors customers. Our राइट। customers, okay, if Unocoin is introducing it, they would have well thought about it, and they would have put their efforts to make sure that it is a good, trustworthy product. Not just the entire platform is trustworthy, but even individual products. We would actually put a lot of thought process behind it. Whether is it suitable for our customers? It's not just about whether we make money or not. So in that way, yeah, we so far have avoided giving leverage on the exchange and such for time being, but our customers can take the loan if required. जी, मेरे पास एक क्वेश्चन है कम्युनिटी से। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या हम लोग और दूसरी एक्सचेंज से, इंटरनेशनल एक्सचेंज से यूनोकॉइन के ऊपर हम लोग फंड ट्रांसफर कर सकते हैं? इज इट ओपन? क्रिप्टो कर सकते हो जरूर, because we allow crypto withdrawals and deposits, जी। but you should be aware of rest of the things. So technicality wise, yeah, it is possible. जी। So I mean, we have seen customers that when they do some small buying of USDT and such, send it to other exchanges in India, Exchanges. sometimes international exchanges by itself. But when you are doing in the bigger quantity, obviously you should be aware of the law of the land, rules, regulations, FEMA, and all those things as well, right? So yeah, one should just be aware, but technically, yeah, it's possible. जी। जी। ग्रेट। और कोई सवाल आशीष जो आपको अभी कम्युनिटी की तरफ से आ रहे हो? या एसआईपी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि एसआईपी किस तरह से वर्क करता है और न्यू यूजर्स यूज कर सकते हैं क्या? Shambhavi, maybe you want to answer it. Why Sathvik is saying that because SPP, which is the SIP, but हम लोग ने उसको नाम दे रखा है SPP Systematic Buying Plan। ये मेरा फेवरेट फीचर है on our platform, जी। तो उसके काम करने का तरीका बड़ा सिंपल है। आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, डेली, मंथली एंड वीकली डिपॉजिट्स। तो आपको अपने वॉलेट में कुछ पैसा ऐड कर देना है। यू कैन स्टार्ट विथ एज लो एज 10 रुपीज। आप उसमें बस एक सेटअप कर दीजिए, आपको चाहे डेली इन्वेस्ट करना हो, चाहे मंथली, चाहे वीकली। ये हर महीने, हर हफ्ते या फिर हर दिन उस एक पर्टिकुलर टाइम पे वो पैसे आपके डेबिट होंगे और इन्वेस्ट हो जाएंगे अपने आप में। उससे क्या होता है, आपको मार्केट को जो है मॉनिटर नहीं करना पड़ेगा बैठ करके कि अरे अब देखो ये जो मार्केट अभी ऊपर जा रही है, अभी इन्वेस्ट करने का टाइम नहीं है, अभी नीचे जा रही है, अभी इन्वेस्ट करने का टाइम नहीं है।
ऐसे क्या होता है, आपकी जो वॉलेटिलिटी होती है वो एवरेज आउट हो जाती है विथ रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, क्योंकि आप हर दिन इन्वेस्ट करो, किसी दिन प्राइस ज्यादा होगा, किसी दिन प्राइस कम होगा, तो जो ओवरऑल वॉलेटिलिटी है वो यहाँ पे बैलेंस आउट हो जा रही है। एंड एज एन इन्वेस्टर ये आपको अपने ओवरऑल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बढ़िया बेनिफिट्स देता है। So this is the story of SBP. Sathvik, you want to add anything to that? In simple, we call it as like dollar averaging. Okay, nothing here. It is averaging over a period of time. We do it for both Bitcoin and Ether. So our customers will be able to place, like Sharma says, daily, weekly, or monthly, or as low as 10 rupees. And it's a good, financial discipline as well. If you anyway have decided that I will invest 2% of my salary or 2% of my portfolio into crypto, then once you stick onto it and have a feature like this, then you don't need to stress yourself on doing lot of research of whether the prices will go up or down. It takes a lot of efforts to predict that. Exactly. And if you try to do it, outperforming the market itself is a challenge. So don't be so stressed if you're investing 2% of your money or your salary and such for crypto. Yeah, it's SBP is a really good way to start. Yeah. And when you actually have a lot of time and when you are willing to take a little bit more risk, think about other things. But if you, for time being, to start with, SBB is the easiest, straightforward, simple way to start. बिल्कुल बिल्कुल। एंड अगर मैं अपना इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव बताऊं, अपना एक्सपीरियंस बताऊं एसबीपी पे एट दैट, तो वो तो बड़ा स्मूथ रहा है, क्योंकि मैंने बस इसे सेटअप करके छोड़ दिया है, फिर मेरे को देखने की भी टेंशन नहीं है, आराम से इट्स गेटिंग इन्वेस्टेड। एंड the best part is it's automated, right? So I had some extra money which I had no use for, मैंने उसको वॉलेट में ऐड कर दिया, उसके लिए एसबीपी सेटअप कर दिया, वो अपने हिसाब से रोज डेबिट होता है, अपने आप से इन्वेस्ट होता है। ओवरऑल जो मेरा पोर्टफोलियो है वो बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे। सो सबसे बड़ी जो चीज है ना जो आपको एसबीपी से मिलती है वो है पीस ऑफ माइंड। मतलब कोई स्ट्रेस ही नहीं है, बस डाल के भूल जाओ उसको वहीं पे। सो दैट इज द बेस्ट अबाउट इट। और हमारा तरफ से फीस भी नहीं है। हाँ, होता है। तो जो जनरली कस्टोडियल फीस चार्ज होती है वो भी आपकी उसमें माइनस हो जाएगी, क्योंकि कस्टोडियल फी का जो प्रोविजन है, अगर आप महीने में एक ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वो फिर आपको नहीं लगेगी। विद एसबीपी हो गई। नॉर्मली व्हेन पीपल मतलब लोग खरीदता है बिटकॉइन जैसा 0.7% फीस लगता है, 0.3%, 4%, 0.7, डिपेंडिंग अपॉन इट्स नॉर्मल ब्रोकरेज और मेकर और टेकर इन द एक्सचेंज। वो सारा अवॉइड कर सकता है एसपीपी। तो हमारा तरफ से एसपीपी होगा बिल्कुल फ्री। राइट। तो मेरा एक क्वेश्चन है सात्विक कि जैसे कोई भी, जैसे आपके कोई भी एक नया पर्सन होता है और आपके काफी क्लोज पर्सन है, और जब वो आपसे कोई एडवाइस मांगते हैं रिगार्डिंग क्रिप्टो, तो आप उनको कैसे एडवाइस करते हो? मतलब सपोज कि मैं आपके काफी क्लोज पर्सन हूँ और मैं आपसे एडवाइस मांग रहा हूँ, तो आप किस तरह से उनको एडवाइस करते हो? कैसे ज्वाइन करना है, या क्या करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं? तो मैं पहला पूछता हूँ, आपको पता है बिटकॉइन क्या होता है? आपको पता है क्रिप्टो क्या होता है? वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो मतलब वो सिर्फ देख रहा है वैल्यू अप्रिसिएशन। वैल्यू, करेक्ट। वो थोड़ा एक्सप्लेन कर सकता है तो मतलब थोड़ा इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, उसके ऊपर थोड़ा अमाउंट भी कमाना चाहिए। सो जैसा वो देख रहा है जी। वो बंदा कैसा रिप्लाई करता है, डिपेंडिंग ऑन दैट मैं कभी कभी देता हूँ बहुत वेरी क्लोज रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, राइट, थोड़ा एडवाइस देता हूँ, बट लेकिन डिस्क्लेमर ऑलवेज रहेगा कि कब क्या होता है मुझे भी पता नहीं, लेकिन अभी वक्त तक जैसा हो चुका है जैसा। सो अभी यू कैन नॉट ऑलवेज से देखो आर्टिकल पढ़ो, रिसर्च पढ़ो, करो, और जैसा हुआ तो मुझे पूछना क्यों, है ना? सो इसीलिए मैं थोड़ा करता हूँ। सो Unocoin जैसा है और हमारा 3-4 कॉम्पिटिटर भी है। आप चाहे तो उसमें अकाउंट बना सकता है। वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि हर कस्टमर इजीली केवाईसी वेरिफिकेशन और इन्वेस्टमेंट करना बहुत सिंपल प्रोसेस ऑलरेडी होता है। सो प्रोसेस में हट गया तो मुझे बताओ, जैसा नहीं हुआ तो वो पूरा आपका
everything in your fingertips. So Right. आप ही कर सकते हो. So that's pretty much what I would say. I will not recommend when to buy. I mean, like कब खरीदना है, कितना अमाउंट खरीदना है, कितना अमाउंट होने के बाद खरीदना है. जी. Definitely don't do that. ओके, तो मेरा एक और क्वेश्चन कि आपका, आई नो आप बीटीसी में अर्ली आपने ज्वाइन किया हुआ, बट बीटीसी के अलावा आपका बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या रहा है अभी तक? अभी तक ईटीएच पे भी है थोड़ा. So ETH, I trust in that, the concept of smart contracts and what you're capable of achieving. जी. Right? So on the other side, I think कोई दिन बिटकॉइन के लिए भी नेटिव लेवल में कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएगा. जी. तो जैसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी आ गया तो शायद लाइक टैप रूट तो ऑलरेडी आ ही चुका है, आई गेस लास्ट ईयर, तो टैप रूट के बाद भी कुछ नेक्स्ट लेवल. लेकिन वो बिटकॉइन इट्स लाइक ए मैमथ. Right. वो बहुत बड़ा हाथी जैसा. जी. So this is not easy to tame it. Right? So it's like only it can only take small steps. Right? जी. So जी. yeah, so शायद 3 4 5 साल में वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी आ गया तो अच्छा होगा. So yeah, बिटकॉइन ईथर वो सिर्फ में वो दोनों ही ट्रस्ट करता हूं. आपका मेन फोकस रहता है. तो वैसे डू यू थिंक कि बिटकॉइन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज गुड थिंग? व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन इट? See, if the problems are not there, it's good. Right? So part of it. Or we can tell that, look, it's like Bitcoin is gold standard anyway. It is separate. Let it just be pure store of value. Don't worry about adding anything to it. It is already doing work. Let it work the way it is. But if you need anything else, whatever it is, there are so many other blockchains available for developers. So let them do. So that is like one way of looking at it. But if you see Bitcoin plus Ether combined, I think that pretty much covers the entire universe of crypto. It's just like little variations. जी. तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन कम्युनिटी से मेरे पास आया, वो पूछना चाह रहे हैं कि क्रिप्टो क्या हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं उनोकॉइन से मेटामास्क के ऊपर या केपलर वॉलेट के ऊपर? मोस्टली एक्सचेंजेस तो इंडिया बंद करके बैठे हुए हैं, तो कैन वी डू दैट? है, लेकिन उनोकॉइन में आपको विड्रॉ कर सकते हैं, कोई बात नहीं. विड्रॉ कर सकते हैं. ओके. Yeah. So with the Indian rupees और क्रिप्टो दोनों के लिए डिपॉजिट और विड्रॉ एनेबल रहता है. जी जी जी. बिल्कुल. एंड आई थिंक ये काफी यूनिक जो पॉइंट है उनोकॉइन के बारे में ये भी है, जब हमने एक क्राइसिस की सिचुएशन देखी है, हमने देखा है कि मोस्टली जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस होते हैं उन्होंने अपने विड्रॉल्स को हॉल्ट कर दिया है. जी. बट उनोकॉइन पे आज तक कभी भी विड्रॉल्स जो है उनको हॉल्ट नहीं किया गया है. पीपल हैव ऑलवेज हैड अ फ्री हैंड. इफ दे वांट टू टेक देयर मनी, it's their money, they can. So that is another thing which makes people believe in the company, believe in the concept of Unocoin. जी. That's nice. Okay, so Ashish and Sathvik, I think we are reaching the end of our session today. तो अगर और कोई सवाल है आशीष कम्युनिटी के, तो जाने के पहले हम उनको भी एड्रेस कर लें. नहीं, यहाँ पर और तो कुछ ऐसे खास, सब कुछ हम लोग वैसे आंसर कर चुके हैं जो क्वेश्चंस आए. जो मुझे लगा था कि यहाँ पर एक एसआईपी विड्रॉल से रिलेटेड क्वेश्चन भी है कि एसआईपी विड्रॉल अगर करना है तो वो क्या उसके कुछ टैक्स रिलेटेड या कोई अदर चार्जेस विड्रॉल में लगते हैं? विड्रॉल के लिए टैक्स नहीं लगता है. सिर्फ विड्रॉल के लिए फीस लगता है, ब्लॉकचेन फीस लगता है. और ये एसबीपी में बिटकॉइन और इतर खरीदने के बाद कब चाहिए वो विड्रॉ कर सकता है. वो लॉक्ड इन नहीं रहता है. आज सुबह प्राइस एप्रिसिएशन पे तो टैक्स लगेगा ही, आई गेस, जो 30% हमें पे करना है. वो सेलिंग नहीं हो रहा है ना, सिर्फ विड्रॉ हो रहा है. सिर्फ तो मुझे लग रहा है विड्रॉ पूछ रहा है शायद. तो हाँ, क्रिप्टो विड्रॉल की बात कर रहे हैं यहाँ पर. सो इसीलिए जस्ट ट्रांजैक्शन फीस ही लगेगा, बिटकॉइन विड्रॉल फीस. लेकिन वो भेजना चाहिए, भेजने के बाद इंडियन रुपी बैंक अकाउंट में चाहिए तो टीडीएस, आई मीन 1% टीडीएस भी लगेगा. तो उसके बाद शायद वही है 1% टीडीएस और सेलिंग फीस कुछ है तो वो लगेगा, जो ज्यादा नहीं होता. जी. एक है ना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि अगर हम लोग किसी दूसरी एक्सचेंज से यूएसडीटी डिपॉजिट करते हैं उनोकॉइन में और उसको आईएनआर में कन्वर्ट करते हैं, बैंक में ट्रांसफर करते हैं, तो क्या इज इट अवेलेबल? यस, आई नो इट्स अवेलेबल. तो यस, मैंने यस कर दिया वैसे उनको पहले.
पिक्ड. आपसे आपसे बुलवाना चाह रहा था कि yes. Yeah, mostly questions we have already picked. Yeah. Okay, great. Then I think this was an amazing session with Sathvik and with Ashish. इतनी सारी चीजें समझने जानने को मिली जितनी कि I think हम अगर 10 sessions individually कर लेते तो इतनी बातें नहीं समझ पाते. जी. I hope the community as well enjoyed it. All of our users who are watching it right now, all of you enjoyed it. Do let us know your feedback on this AMA in the comment section. Maybe right now, maybe after it's done. It was lovely having you all. Thank you so much, Ashish, for taking out some time and joining us today. Thank you so much, Sathvik, for taking No out your problem. precious time and Thank you. coming in here. Thank you. So, thank you, everyone. Thank you, Sathvik and Ashish. We'll see you again.